Hare Krishna. We are reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, chapter number 6, Conversation between Narada and Vyasadev, text 21. Hanta asmin janmani bhavan mam drashtum iha arhati avipakva kashayanam durdarshaha aham kuyoginam hantasmin janmani bhavan hantasmin janmani bhavan mamam drashtum harhati avipakva kashayanam durdarshoham kuyoginam hantasmin janmani bhavan mamam drashtum harhati avipakva kashayanam durdarshoham kuyoginam. Anuvad. Hey Narad. The Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints can hardly see me. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vijnana Goswami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine Mancha Kalpatarudesha Kripa Sindhu Devacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Ajanubam Vitibhujam Kanakavadata Sankirtanaya Kapitaram Kamala Daksha Vishwambaro Dvijavaro Yugadharma Pava Vande Jagat Priya Karo Karanam Nandah Pravishya Mama Vachim Imam Prasuptam Sanjivayate Kila Shakti Darak Svadhamna Anyam Shahasta Charana Stavanat Vagadi Pranannamo Bhagavate Purushaya. Hare Krishna. So this is very important and instructive verse for us from Srimad Bhagavatam. One of those verses which we have to know very well to conduct our devotional service properly. बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम के हिसाब से हमको और जिस प्रकार से हमारा जीवन को निर्वाहित करना चाहिए इस श्लोक के अनुसार से. Narada Muni himself is describing his story of his life to his disciple Vyasadev. नारद मुनि खुद अपने जीवन का कहानी व्यासदेव को सुना रहे हैं, अपने शिष्य. And he explained how he met with the sages and how he took their remnants and how he got their mercy in the form of mantra. किस प्रकार से उन्होंने महान वैष्णव को मिला, उनका सेवा किया और उनका महाप्रसाद ग्रहण किया. And mantra also. और मंत्र भी ग्रहण किया. Their mercy in the form of mantra. उनका कृपा मंत्र के रूप में ग्रहण किया. So I will be very careful with you.
And and then we know, he says that by my great fortune, my mother died. Usually you don't expect this statement from a 5-year-old boy. But because he realized the truth and he realized that the attachment of his mother is not really conducive for his devotional service, he viewed the things in a particular way, which we don't have to imitate. उनको सत्य का जानकारी हुआ, साक्षात्कार हुआ, इसलिए उनको समझ में आया कि जो मेरा आसक्ति है मेरे माँ के प्रति, वो मेरा भक्ति के लिए बाधा है। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण उनके पास था, उसको हम अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण नहीं कर सकते हैं, सही बात है। But Narada Muni got, in his previous life, got such a strong desire, by all means, to realize God in this life, that for him, the attachment of his mother was very strong impediment. तो उनको इतना तीव्र इच्छा हुआ भगवान का साक्षात्कार के लिए, तो उनका माँ के प्रति जो उनका आसक्ति था, उनके लिए बाधा था। Krishna within our heart knows our desires. कृष्ण हमारे हृदय में है, उनको हमारे इच्छाओं के बारे में जानकारी है। In fact, Srila Prabhupada says that the soul is only capable of desiring, nothing else. सिर्फ आत्मा से इच्छा कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। The rest is done by the Lord and by the arrangement of material nature, but the only ability which we have is to desire. बाकी सारा कार्य भगवान के द्वारा और भक्ति प्रकृति के द्वारा किया जाता है, हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। And Srila Prabhupada explains in Bhagavad Gita that this desires which is emanating from the soul is like smell. जो इच्छा भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं, जो इच्छा आत्मा से आता है, वो एक गंध की तरह है। And the Lord situating in the heart, he just smells our desires. भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप स्थित है, वो उसको सूंघते हैं किस प्रकार की गंध है। And usually the smell is not so good. So therefore the Lord is not very happy to be in our heart. It's quite a smelly place. But when he feels that there is a pure desire to serve him, desire to please him, he's very happy. He becomes very happy in our heart. जब हमारा इच्छा शुद्ध इच्छा है सेवा करने के लिए, तब बहुत खुश हो जाते हैं हमारे हृदय में रहने के लिए। And therefore sometimes people wonder why the Lord does not fulfill my desires. कभी-कभी लोगों को आश्चर्य होता है कि भगवान मेरी इच्छा क्यों पूर्ण नहीं करते? Because they are not good desires. क्योंकि वो अच्छा इच्छा नहीं है। It's better that he will not fulfill our desires. अच्छा है कि वो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करते। He only wants to do something good for us, and therefore he's not in a hurry to fulfill all our crazy desires. वो हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए वो इतना जल्दीबाज में नहीं है कि हमारे सारे इच्छा पूर्ण करने का। But when we have good desires, the Lord definitely reciprocates with these good desires. हमारे पास अच्छा इच्छा है, तो तुरंत भगवान उसके प्रति वो पूर्ण करते हैं। And therefore he reciprocated with the desire of Narada, and he helped him to overcome all the impediments, even though he was a very small boy. क्योंकि नारद को बहुत तीव्र इच्छा था हमको प्राप्त करने का, इसलिए भगवान ने वो इच्छा पूर्ण किया। हालांकि वो छोटा लड़का है, फिर भी उनके सारे जो बीच का कठिनाई है उसको निकाल दिया। And when Narada Muni found out early in the morning that his mother is dead after the snake bite, he just burned the hut, meaning that he didn't have any attachment to his material life, any attachment to the dwelling place or anything, and just went straight to Himalayas. तो उनको सुबह-सुबह पता चला उनका माँ का देहांत हो गया, तो उन्होंने हृदय को जला दिया और उनको किसी प्रकार का उनके रहने का जगह के प्रति और इस प्रकार का कुछ भी आसक्ति नहीं था, तुरंत वो हिमालय चले गए।
This story is to tell us and to show us how renounced he was in the heart, not artificially, but really within the heart. वो ये कहानी बताता है कि किस प्रकार से वो सही तरह से अनासक्त थे, ऐसा कि आर्टिफिशियल नहीं, दिखावा के लिए नहीं है, कृत्रिम नहीं है, लेकिन वो पूर्ण तरह से अनासक्त थे. And he was completely fearless. वो बहुत निडर थे. Because the fearlessness is also the sign of detachment. क्योंकि निडर है जो जिनके अंदर भय नहीं है, वो अनासक्त के वजह से होता है. When we are afraid of something, it means that we have attachments. We're afraid of losing what we are attached to. हमको डर लग रहा है, मतलब बहुत आसक्त है, क्योंकि हमारा जो आसक्ति चीज जा रहा है तो उससे डर लगता है. So from all points of view, he was totally detached, completely attached to the Lord with the desire to serve the Lord. सारे प्रकार से अनासक्त थे, लेकिन भगवान को सेवा करने में पूर्ण तरह आसक्ति था. So while traveling, he ultimately came to a very nice forest. चलते-चलते वो एक सुंदर जंगल में आए थे. And beautiful lake was there with the lotuses. बहुत अच्छा सुंदर तालाब है, उसमें कमल पुष्प हैं. And he liked the place. उनको अच्छा लगा. And that was his mistake. ये उनका गलती था. Because he liked this place independently on his service to the Lord. उनको स्वतंत्र रूप से ये जगह अच्छा लगा, भगवान का सेवा के अतिरिक्त. He said, such a nice place. उन्होंने बोला बहुत सुंदर जगह है. That was enough to become the impediment. वो उनके लिए बाधा हो गए वो. So he sat down and he started chanting mantra, how he was taught by this great Vaishnavas who visited his house. वो मंत्र जप करने लगे, जिस प्रकार से महान वैष्णव ने उनको सिखाया था जब उनके घर में आए थे. And because his desire was so pure, very soon the Lord appeared first in his mind and then directly in him, in his vision. तो इनका इच्छा इतना शुद्ध था कि भगवान तुरंत उनके हृदय में प्रकट हो गए और उनके सामने भी प्रकट हो गए. It is said that when we are meditating, there are 3 stages in which the Lord reveals himself or manifests himself. 3 अलग-अलग स्तर भगवान हमको साक्षात्कार करते देते हैं. In the first stage, when our heart is somewhat pure, we can get spurti of the Lord in the heart. हमारा हृदय जब थोड़ा शुद्ध हो जाता है तो भगवान का स्फूर्ति होता है. And it's very short-lived. It's just for a short while the image of the Lord will appear in our heart. बहुत थोड़ा समय के लिए हमको भगवान का साक्षात्कार होता है हृदय में. But then the next stage, when our meditation becomes more deep and more profound, then the Lord completely occupies our heart and our consciousness, and we can see Him within our heart in a very clear way. जब हमारा भजन बहुत तीव्रता से होता है, तो हमारे हृदय में संपूर्ण रूप से भगवान व्याप्त होते हैं और उनका जो दर्शन है और अच्छे तरह से होता है. And then the third stage, when our meditation becomes really successful, then we can see the Lord outside, Avirbhav. He will show Him outside of our heart, not only in our heart. तो जब हमारा भजन संपूर्ण रूप से वो सक्सेसफुल मतलब पूर्ण हो जाता है, तो तब भगवान को हृदय में नहीं, हम लोग बाहर भी भगवान का दर्शन ले सकते हैं. That's the perfection of our meditation upon the Lord, when we see Him outside, standing, not only within our heart, not with our atmadrishti, with the eyes of our soul, but even externally. तो हमारा भजन का जो सफलता है, वो भगवान को बाहर देखना, सिर्फ हृदय में नहीं, बाहर भी भगवान का साक्षात्कार होना, वो सफलता है हमारा भजन. So in one sense, Narada Muni achieved this amazing success when he saw the Lord just in front of him. तो नारद मुनि तो सफलता प्राप्त हुआ, क्योंकि
क्योंकि वे भी भगवान को उनके सामने थे, उनका दर्शन मिला। And he became completely ecstatic about this vision. He became overwhelmed. He became so happy when he saw the Lord. तो बहुत ही खुश हो गए और उनको बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ जब भगवान को इस प्रकार से दर्शन मिला। But for a split second it continued and then the Lord disappeared. एक ऐसा क्षण के लिए इस प्रकार का भगवान का दर्शन हुआ, फिर भगवान अदृश्य हो गए। It's completely the good will of the Lord to reveal Himself to us or not to reveal Himself to us. भगवान का स्वेच्छा है कि वो हमको दर्शन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। He can reveal Himself to anyone. वो किसी को भी अपना दर्शन दे सकते हैं। No qualification is required. कुछ योग्यता जरूरत नहीं है। It's completely, in His hands. वो पूरा उनके हाथ में है। But at the same time, He knows what He's doing. लेकिन उसके साथ-साथ उनको पता है क्या कर रहे हैं भगवान। And therefore, He disappeared from the vision of Narada, and Narada was trying to reproduce all the conditions. He was trying to chant the mantra, and he was sitting and meditating, and he was really nothing worked. नारद मुनि को पहले दर्शन हुआ, तुरंत अदृश्य हो गए। तो नारद मुनि ने सोचा जो भी मैं अभी तक किया फिर से वो सारा चीज करूंगा, बहुत प्रयास करूंगा और वही मंत्र जप करूंगा। इतना प्रयास करने पर भी भगवान का दर्शन नहीं। Because the Bhagavan darshan does not depend on our endeavors. क्योंकि भगवान का दर्शन हमारे बलबूते पे नहीं होता। This is a very nice instruction because we have to understand that Bhagavan is completely independent. ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि भगवान स्वतंत्र है। भगवान स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र भगवान। इसलिए वो हमारे प्रयास से नहीं प्राप्त नहीं होते। And Narada Muni was completely desperate. He started crying. नारद मुनि रोने लगे बहुत ही तीव्रता से। And in this moment, he heard the voice. फिर उसके बाद उनको एक आवाज सुनाई दिया। This time, Krishna didn't appear in front of himself, in front of him, but by transcendental voice, he made the message clear to Narada Muni. तो उस समय भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनका दिव्य आवाज उनको सुनाई दिया और उसमें संदेश उनको पूर्णतः समझ में आया। It is said in the previous verse that his voice was agochara. पिछले श्लोक में बताया कि उनका आवाज अगोचर है। Agochara giram. Agochara giram means which cannot be heard by material ear. भौतिक कान से सुन नहीं सकते अगोचर आवाज। So he reveals himself from inside in the form of voice, and this voice was very consoling to Narada Muni. ये हृदय से उनका आवाज सुनाई देता है और वो बहुत ही उनको सांत्वना दिया नारद मुनि को। It is said in the previous verse, Prashamayan Mayan. Prashamayan means he was very pacified by the sound of this voice. भगवान का आवाज सुन के उनको सांत्वना मिला नारद मुनि। When we hear something which is coming from the Lord, it's very pacifying to our heart. कुछ भी हम भगवान से सुनते हैं तो हमारा हृदय को सांत्वना मिलता है। Now our heart is burning with all kinds of desires, and there is always disturbance and anxiety in the heart. हमारे हृदय में अभी जल रहा है हमारा हृदय, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं और बहुत सारे हमारे समस्याएं हैं। But when we come in contact with the Lord, the peace is coming within our heart. भगवान के संपर्क में आते हैं तो हृदय के अंदर शांति महसूस होता है। Depending on the closeness or the extent the Lord reveals Himself. कितना भगवान उनको साक्षात्कार हमको मिलता है, उतना हमको सांत्वना मिलता है। Like when we chant the holy name, it can bring peace to our heart. जब भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे हृदय अंदर शांति प्राप्त होती है। But not necessarily. Why? Because the Lord may manifest within the name in the different degrees. भगवान भी अपने
नाम में अलग-अलग स्तर में उनका साक्षात्कार होता है। When he manifests fully, this sound of the holy name will give us practically the same experience as we see him. जब पूर्ण तरह से भगवान का साक्षात्कार होता है उनके नाम से, तो भगवान को जब देखते हैं जिस प्रकार का आनंद मिलता है उस प्रकार का आनंद मिलेगा। Like Srila Rupa Goswami says, when I chant the holy name, I want to have hundreds of tongues because the Lord is directly dancing on my tongues. रूप गोस्वामी बोलते हैं जब भगवान का मैं नाम लेता हूँ मुझे लगता है कि मुझे हजारों जिह्वा चाहिए ताकि भगवान मेरे जिह्वा में नृत्य कर रहे हैं। And when I hear the holy name, I want to have millions of ears. मैं जब सुनता हूँ जब नाम भगवान का मुझे लगता है मुझे करोड़ों का कान चाहिए उनका नाम सुनने के लिए। And then he says, "Na jane janito," what is it? Krishna Varnam Dvai. "Na jane janito, kiya viramritai." Krishna Varnam Dvai. He says, I don't know how much nectar is there in these two syllables, Krishna. I don't know how much nectar is there. तो ये कृष्ण का जो दो शब्द में कितना अमृत है मैं जान नहीं सकता इस प्रकार से बोल "Na jane janito, kiya viramritai." Krishneti Varnam Dvai. And we also don't know how much nectar is in these two syllables. हम भी नहीं जानते कितना अमृत है ये दो शब्द। For us, there is no nectar at all. हमारे लिए कुछ अमृत नहीं है उसमें। That's the difference. इतना अंतर है। Why? Because when a pure devotee chants the holy name, the Lord fully manifests within the syllables of the holy name. जब शुद्ध भक्त नाम जप करते हैं तो पूर्ण तरह से भगवान प्रकट होते हैं दो शब्द में। And when we chant the holy name, he may sometimes, but not so much. कभी हम जप करते हैं, कभी-कभी थोड़ा भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन हर बार नहीं। In the same way, when Narada Muni, he heard the message from the Lord, he directly was in contact with him. For him, it was no difference between seeing the Lord and hearing the Lord. तो जब नारद मुनि जब भगवान का नाम जप करे तो स्वयं भगवान के संपर्क में है, उनको सुनना और देखना कुछ अंतर नहीं। But unfortunately, the message of the Lord was not so consoling and pacifying. Nevertheless, he was happy to receive this message. And the message was, you will not see me anymore. But the Lord also said, in this life, Asmin Janmani. And he says, Hanta. The first word in this was Hanta, which is a invocation, but it's a very, very nice invocation. Very Hanta, you say when you have some compassion and when somebody is really dear to you. Sambodhan. संबोधन कर रहे हैं भगवान, लेकिन ये साधारण शब्द नहीं और जिनके प्रति ज्यादा प्रेम है उनके प्रति ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। There are many ways to approach in Sanskrit. There's many different invocations, many kinds of invocations. So Hanta means compassion. So he felt this compassion which is coming from the Lord. हंता मतलब दया के भाव है। तो संस्कृत में अलग-अलग तरीके से किसी को व्यक्ति को संबोधन किया जाता है। हंता मतलब जो दया का भाव से संबोधन है। Like I Nanda Tanuja Kinkaram. I is one of anyway, there are many different ways of sambodhan in Sanskrit. So, and he says, Hantasmi Janmani Bhavan. In this Asmin Janmani Bhavan, you. And Bhavan is also very respectful, very, very respectful way of approaching somebody. You, very respectfully, will not see me. Iha namam drashtum iha arhati. You don't deserve to see me. Arhati. भवन मतलब आदर पूर्वक बताना, लेकिन आदर पूर्वक क्या बता रहे कि आप मुझे ये जन्म में फिर से देख नहीं पाएंगे। So why he is not deserved? Why in other words, the Lord
says here that you don't have the required qualification. You have not reached this point. आपको मुझे दर्शन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको योग्यता नहीं है, आप इस स्तर पे पहुंचे नहीं अभी तक। Why? And he explains, avipakva kashayanam. क्यों उनका कारण बताते हैं? Because kashaya in your heart is avipakva. आपका जो हृदय के अंदर कषाय है वो परिपक्व नहीं हुआ। Kashaya means color. कषाय मतलब रंग। Like this color is called kashaya. Kashaya. So kashaya means basically a little tinge of material desire, of material contamination within the heart. तो भौतिक थोड़ा कल्मश उसको कषाय बोलते हैं। It's like if we take little hing and put it into, or whatever, if we put little hing in a bottle, and then we take off the hing, and then we wash the bottle and wash it again and wash it again, and then we smell, still the hing will be there. बॉटल में रख के साफ करेंगे, निकालेंगे, कितना भी साफ करो उसमें हिंग का स्मेल आता है। Yeah. So in the same way, the hing is not there, but the smell of the hing is still there. हिंग नहीं है लेकिन उसका गंध है। In the same way, Narada Muni was completely pure in the heart. There was no smell, there was no material desires in the heart. He only wanted to see the Lord. But little smell was still there. And the Lord said, I don't like this, even this smell I don't like. Even if it's very little, still I don't like it. So you will be able always to see me, like in this lifetime, Narada Muni always sees the Lord. Whenever he chants his name, he sees the Lord. No problem for him. But the Lord says, you will be able to always see me when your heart will become completely pure. नारद मुनि कभी भी चाहिए भगवान का दर्शन मिलता है, लेकिन भगवान बताते हैं जब ऐसा दर्शन मिलेगा जब आप पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाएंगे। For a short second you may see the Lord, and sometimes you may feel that the Lord is there in His holy name, but constantly to see and to feel the Lord, you have to be 100%, 100% pure. कभी-कभी हमको भगवान का साक्षात्कार होता है उनके नाम में, लेकिन पूर्ण तरह से हर समय भगवान का साक्षात्कार उनके नाम में चाहिए तो हम भी 100% पूर्ण होना, शुद्ध होना चाहिए। And Srila Prabhupada explains what is this kalmash, what is this contamination within the heart. प्रभुपाद बताते हैं कल्मश क्या है हृदय के अंदर हमारा। Says usually we say that the usual understanding that kalmash is contamination is tamagun and rajagun. कल्मश क्या है? तमोगुण और रजोगुण। But Narada Muni didn't have tamagun or rajagun. नारद मुनि को दोनों नहीं है, रजोगुण नहीं तमोगुण। Not the slightest, no tamagun, no rajagun. थोड़ा भी तमोगुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है। He only had some sattva. उनको सिर्फ सत्व है। But from the point of view of Bhagavan, sattva is material. It's not so good. भगवान के दृष्टिकोण से सत्व भी भौतिक है। He wanted to live in the forest. He liked this atmosphere of the forest, peaceful, the birds are chirping and so nice smell and nice, pure. And Krishna says, okay, live in the forest, no problem. I have no problem with this. तो उनका एक ही गलती था कि वो सिर्फ ये जंगल के प्रति थोड़ा आसक्त था क्योंकि अच्छा पक्षियां हैं, अच्छा सुगंध है और वो जंगल में रहना चाहते तो भगवान बोले ठीक है इधर रहो। Yeah, if you like to live in the forest, please, no problem. आप जंगल में रहना चाहते हैं ठीक है रहो, मुझे कुछ उससे समस्या नहीं है। So, and he himself says in Bhagavad Gita that even sattva gun binds us. भगवान बताते हैं सत्वगुण भी हमको बंधन में डाल देता है। Sattva gun is good as a starting point for cultivating Krishna consciousness. सत्वगुण अच्छा है भक्ति को बढ़ाने के लिए। Aram में.
in the beginning stages. But ultimately we will have to get rid of sattva gun, because sattva gun gives you independent desires independent on the service of the Lord. तो हमको सत्वगुण में भी हमको स्वतंत्रता हम लोग रहना चाहते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार. Sattvic people, they want to be very peaceful. They like to be peaceful. सत्वगुण में जो व्यक्ति हैं वो शांत रहना चाहते हैं. And they want to be independently peaceful. वो स्वतंत्र रूप से शांत रहना चाहते हैं. Once there is a nice story about Prabhupada. एक छोटा कहानी है प्रभुपाद का. He came to Canada. And the temple president there said, there is a very nice church building in Toronto, but it costs a lot. But it's very nice for the temple. And but we don't have even close so much money. And Prabhupada said, no, we don't need this. Why do we need this headache? We don't need headache. Don't go for it. तो प्रभुपाद टोरंटो गए तो उधर के टेंपल प्रेसिडेंट ने बताया एक बहुत अच्छा सुंदर चर्च है, तो उसको खरीदेंगे तो मंदिर के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं, उसका नजदीक जाने के लिए भी उतना भी पैसा नहीं है हमारे लिए. तो प्रभुपाद ने बोला कि ऐसा सरदर्द हमको नहीं चाहिए, उसको छोड़ दो. We should just do our bhajan, Hare Krishna, Krishna भजन करना चाहिए, हरे कृष्ण. And then in 5 minutes, Srila Prabhupada calls this president and says, we go and see this building. 5 मिनट के बाद प्रभुपाद बोलते हैं जाके वो बिल्डिंग को देख के आएंगे. And then Prabhupada goes and sees the building and says, very good building. But we don't need headache. No, we don't need headache. उधर जाते हैं पूरा बिल्डिंग को देखते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद बोलते हैं हमको सरदर्द नहीं चाहिए, इतना खरीद नहीं सकते. And then next day he calls the temple president and says, how much money do you have? टेंपल प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, बोलते कितना पैसा है आपके पास अभी? He says, well, this building costs $100,000, one lakh, and I only have $10,000 or something like that. $1 lakh का है, लेकिन मेरे पास 10,000 रुपए ही है. Prabhupada says, Prabhupada says, no, we don't need headache. No, it's not. And then in half an hour he calls him and says, what if I give you 20 more thousand? Will you get another? And then this temple president says, Prabhupada, but we don't need headache. And Prabhupada looks at him, stares at him and says, we need headache for Krishna. So, otherwise you will be in Maya. If you want to be independently peaceful, it's not Krishna consciousness. You just want to be peaceful. It's sattvic, it's nice, but it's not so good. It's avipakva kashaya. It's still the dirt which we have not digested yet. And ultimately, to be with the Lord, we have to digest all the dirt, not 90%, not 95%, not even 98%, not even 99.99999%. Sat pratishat. तो ये जो गंदगी है इसको पचाना चाहिए पूरा 95 नहीं 98 नहीं 99.99 पे नहीं पूरा 100% हम शुद्ध होना पड़ेगा. Or better 108. 108%. So, and this is the point of this verse. He is very clear. He said, Durdarsho aham kuyoginam. For those who are not really suyogi, those who are not really in the first class platform, I'm not easily to be seen. Durdarsho. जो फर्स्ट क्लास में नहीं है ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत दूरदर्शन में दर्शन नहीं दूंगा. So therefore we have to really understand that sadhana is a very serious process. हमको समझना चाहिए कि
साधना बहुत ही तीव्रता से करना चाहिए हमको। Sometimes when we clean the floor or whatever, we just clean a little bit and little dirt is there, but who notices it? Nobody notices. It's okay. कभी-कभी कमरे को साफ करते हैं तो इधर-उधर थोड़ा-थोड़ा इधर कोने में अपना गंदगी रह जाता है, लेकिन कौन उसको ध्यान देता है? कोई ध्यान नहीं देगा। But the Lord notices. लेकिन भगवान ध्यान देते हैं उसको। He knows. वो समझते हैं। And therefore, when Lord Chaitanya was doing this Gundicha Marjanam Lila, so he was showing personally how to clean the heart. चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं तो स्वयं दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मंदिर को साफ करना चाहिए। He told all the devotees, you clean this Gundicha Mandiram very nicely, and he was cleaning himself. तो सभी भक्तों को बताया आप गुंडीचा मार्जन आप अच्छा से साफ करो और खुद भी साफ कर रहे थे। And everyone would, get some dirt, some piles of dirt, but the Lord's pile of dirt was 10 times bigger than anyone else. सभी लोगों ने थोड़ा-थोड़ा कचरा इकट्ठा किया, लेकिन भगवान का जो कचरा था वो 10 गुना ज़्यादा था सभी से। Again and again he was cleaning and then washing with the water and then taking little dust. बार-बार उसको साफ कर रहे थे, पानी से भी साफ करते, बार-बार कर रहे थे और थोड़ा-थोड़ा छोटा-छोटा भी वो गंदगी निकाल रहे थे। And then he says, only after that Jagannath can come to this mandir when it's completely pure. Absolutely pure. Not before that. In the same way, the Lord will come to our heart and will reside there permanently if the heart is completely pure. If you just do little brooming, you will not be able to cheat the Lord this way. He says, not this life, next life, and next life, and next life. So, and usually it is said, even Srila Rupa Goswami says that, to achieve Prem, you need at least 2 lives or 3 lives. Because we need to get very deep samskaras, very deep bhakti samskaras. And in this life we are trying, and we should try very diligently and conscientiously to make these samskaras of service very deep. Because what we have now, we have very deep samskaras of enjoyment in this world, independent enjoyment, very deep samskaras. We have been enjoying in this world and exercising our controlling power in this world for so long. And then we think, I will come on Sunday and will serve a little bit and then I will go back to Godhead. Hare Krishna. You have this scale, and on one scale you have all these deep, deep, deep desires to enjoy, and then a little bit you put something on another scale and you think, it's fine. I will put one tulsi leaf and go back to Godhead. हमारा तराजू इस प्रकार से है कि इस तरफ से हमारा भोगने का इच्छा इतना बहुत बड़ा है और थोड़ा-थोड़ा इस तरफ हम तराजू में डाल रहे हैं। हम सोचते हैं थोड़ा एक तुलसी पत्ता डालूंगा और मैं भगवान जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। Every day is the opportunity for us to deepen our service attitude, service vritti, seva vritti. हर रोज हमारा जो सेवा वृत्ति है उस भाव को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। To counteract all the experiences which we have, all other experience, this enjoyment experience. And we have to be conscious about this. We have to do it with the presence of our mind.
When we chant Hare Krishna, we have to do it. This is my service. This is my very important service. I am serving the Lord. जब जप करते हैं हमको समझना चाहिए कि बहुत बड़ा सेवा है मेरा और इस चेतना से हमको करना चाहिए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Not that Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. I'll go do my business. No, we have to be really concentrated and very serious about it. तो हम जब करते समय ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं ऐसा ही हमारा मन इधर-उधर लगा के मैं बिजनेस को जाऊंगा इस प्रकार से नहीं हमारा पूरा मन लगा के जप करना चाहिए तीव्रता से. Therefore, Srila Rupa Goswami says that usually devotional service takes many stages. We go from one stage to another stage. It's a gradual process. तो भक्ति एक-एक स्तर से हमको लेकर जाता है वो एक ऐसा प्रगति के मार्ग में. Gradual process of purification of the heart. तो हमारा हृदय का भी अलग-अलग स्तर में शुद्धिकरण होता है उसका. And Sri Chaitanya Mahaprabhu also says, Cheta Darpanam Arjanam Bhava Mahadavagni Nirapanam Shreyah Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Budhivardhanam Pratipadam Purnamritas Swadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. चैतन्य महाप्रभु इस शास्त्र में अलग-अलग स्तर बताए किस प्रकार से हमारा मन का शुद्धिकरण. So first is Cheta Darpanam Arjanam, preliminary purification of the heart when the gross desires of Kama and Lobha, of this Rajas and Tamas are gone from the heart. तो पहले स्तर में हमारा जो स्थूल रूप से जो गंदगी हृदय से वो निकल जाता है वो रजोगुण और तमोगुण है. Cheta Darpanam Arjanam means that our Chetana, our mind, restores its ability to reflect the form of the Lord. तो हमारा जो चेतना है फिर से भगवान को स्थापित करने का जो रूप है उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं. Like Vishwanath Chakravarti Thakur explains that our mind or our heart should be very transparent so that it would be Bhagavad Bimba Grahanam, so that it would reflect the form of the Lord. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हमारा मन इतना शुद्ध होना चाहिए कि भगवान का जो रूप है उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए हमको. Therefore, it is said that we first concentrate on the hearing the name of the Lord, the sound of the name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो भगवान का नाम को सुनने का ध्यान से हमको प्रयास करना चाहिए पहले. But then the roop of the Lord will be reflected within our heart automatically. We will see the roop. Whenever we chant the name, we will see the form of the Lord, the roop of the Lord. And then Bhava Mahadavagni Nirvapanam, then all our anxieties are gone. All our fears are gone. All our problems are gone. Only when we feel that there is Lord and we have this direct experience with the Lord, then Bhava Mahadavagni Nirvapanam, we become completely free from all the anxieties and disturbances in the mind. तो जब हम समझते हैं कि भगवान है और भगवान को साक्षात्कार होता है, सारे जो मन के अंदर चिंता है उनसे दूर हो जाएंगे. And then Shreyah Kairava Chandrika Vitaranam means that our Shreyas, the lotus of our good fortune, becomes manifested. It means that there is no other desire at all. तो हमारा जो कमल, जो हमारा भाग्य का कमल है, वो खिल जाता है और कुछ इच्छा नहीं रहता हमारे पास. This is the stage where there is no other desires, no separate desires. I only want to be with the Lord. I only want to serve the Lord. इस समय और कुछ इच्छा नहीं रहेगा, एक ही इच्छा रहता है, मैं सेवा करना चाहता हूँ भगवान का, और कुछ इच्छा नहीं. And then Bhava Mahadavagni Shreyah Kairava Chandrika Vitaran Vidyavadu Jivanam, then only we will be able to see who I am, what I am in relationship with the Lord. What is my seva? What is my Siddha Swarup, the eternal form in the spiritual world? तभी हम भगवान को हम समझ सकते हैं कि मेरा क्या स्वरूप है, भगवान के साथ संबंध है और हमारा सिद्ध स्वरूप क्या है आध्यात्मिक जगत में. Anandam Buddhi Vardhanam, and then you become completely overwhelmed with bliss. और फिर हम
जाते हैं. Pratipadam Purnamrita Svadanam, you will feel practically every breath which you make will become blissful. Pratipadam, every second you will feel the presence of the Lord who is Sachitananda Vigraha. And then only Sarvatma Snapanam, then only you're completely pure. Sarvatma Snapanam, there is no dirt, there is no discussion, not even little smell of the dirt. So this is the process, and Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. You will be able to do it if you do this Shri Krishna Sankirtanam. ये actually हमारा जो मार्ग है और ये हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम श्री कृष्ण संकीर्तन करते हैं. If you chant the holy name with the devotees, with the pure heart, like-minded devotees who have this desire or aspiration to come closer to God. तो हम भक्तों के संग में इस प्रकार से जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जिनका भी इसी प्रकार का इच्छा है जो भगवान के मार्ग में जाना चाहते हैं. So it's possible, but again, as I said, this samskara, this experience, this anubhuti or anubhav should be very, very deep in our heart. Because our taste lays where our samskaras are. Now, if you take meat, after some time you get some samskara and you will get the taste in the meat. Otherwise, there is no taste in meat. It's disgusting. तो कोई मांस खा रहा है, पहली बार कुछ नहीं होता, खाते खाते उसको मांस के अंदर रुचि होता है, लेकिन मांस इतना गंदा है, लेकिन उसको कुछ रुचि नहीं है, लेकिन खाते खाते उस स्वभाव आ जाता है. In the same way, when the first time you chant Hare Krishna, there is no taste. इसी प्रकार जब हरे कृष्ण जप करते हैं उसमें रुचि नहीं है हमको. But if you make this samskara or this experience very deep, you will get a lot of taste, much more than from the meat. जब करते करते उसके अंदर रुचि प्राप्त करते इतना रुचि आता है जो मांस में भी इतना रुचि नहीं, उतना रुचि प्राप्त करते. But we need to make this samskara very, very deep within our heart. संस्कार बहुत तीव्रता से हमारे हृदय के अंदर लेके जाना चाहिए. And then, sarvatma snapanam, we will be completely pure. उस समय हम पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाते हैं. And it may take few lifetimes. कुछ जन्म लग सकते हैं हमारे लिए उसके लिए. Not a big deal. लेकिन कुछ इतना बड़ा समस्या नहीं है. For a long time we have been rotting here in this material world, but Krishna says, Nehabhikramana shasti pratyavayana vidyate svalpam apyasya dharmasya trayate mahatavayam. Even very small, so alpam, ne ha abhikram. If you do little, very little step, it will be always with you, no problem. तो थोड़ा बहुत भी आप इस प्रकार इस मार्ग में आप प्रयास करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं. Trayate mahatavayam. You will be able to continue because this is the real sampati, this is the real wealth which we can have. ये हमारा सही संपत्ति है. What is our sampati? What is the wealth? What kind of wealth it is if it's today is there, tomorrow it's not there. It's not ours. ये क्या संपत्ति है? आज हमारे पास है, कल हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा संपत्ति नहीं है. Today you have so many zeros in your bank balance, and tomorrow you only have 1 zero in your bank balance. But it doesn't matter, it's zero is zero. Because it doesn't belong to you. It's completely not within your disposal. You will not be able to take it with you. Not even 1 zero you will take. But you can only take the wealth of your experience, of your love which is there within the heart.